Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, hope you all will be fine. So in our previous lectures we had studied about the chambers of the heart and heart valves, and in today's lecture we are going to start the basic function of the heart. I am giving an overview of a previous lecture in which we had studied about the chambers of the heart. So I had told you that there are four chambers, that is right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle towards the left side, and same wise there are four heart valves which I taught you in my previous lecture. The named are atrioventricular valve, which is also called tricuspid valve, and I had told you that tricuspid valve is present between the right atrium and the right ventricle. The mitral valve, which is also called bicuspid valve, and the bicuspid valve or mitral valve is present between the left atrium and the left ventricle. Same wise the third valve of the heart is aortic valve, which is present between the left ventricle and the aorta, and the last valve of the heart is pulmonary or pulmonic valve, which is present between the right ventricle and the pulmonary artery. So so this was a little summary about my previous lecture, and today we are going to start about the basic function of the heart, how the heart functions in your body. So this is a cross-sectional of a human normal heart. So I have told you that there are four chambers: right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle. राइट एट्रियम में वीन्स ओपन होते हैं, दो वीन्स हैं, जिसको एक को सुपीरियर वेना केवा कहते हैं और दूसरे को inferior vena cava कहते हैं. So what is the function of these two veins? The function of these two veins are that it supply the deoxygenated blood. So first of all I will let me teach you what is oxygenated blood and what is deoxygenated blood. Oxygenated blood is the blood which contains oxygen, जिसको साफ खून भी कहते हैं, and deoxygenated blood are those blood which do not contain oxygen and which contains carbon dioxide instead of oxygen, जिसको गंदा खून भी कहते हैं. So जो superior vena cava या inferior vena cava आपके right atrium में open होता है, these vena cavas bring the deoxygenated blood from all over the body, from all parts of the body to the right atrium. So this deoxygenated blood is then shifted to the right ventricle from the right atrium through tricuspid valve. ये deoxygenated blood जो है ये right atrium से right ventricle में transfer होता है through which valve? Through tricuspid valve, which is also called atrioventricular valve. So from the right ventricle this deoxygenated blood is transferred to the lungs through pulmonary artery. पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स चला जाता है, लंग्स को शिफ्ट हो जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, ताकि वो वहां से ऑक्सीजन ले सके. यहाँ पे भी एक वॉल्व है जिसको पल्मोनिक वॉल्व कहते हैं, एंड आई हैड टोल्ड यू अबाउट द फंक्शन ऑफ दिस वॉल्व इन माय प्रीवियस लेक्चर, दैट इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी while it allows the blood to flow from the right ventricle into the pulmonary artery and from the pulmonary artery into the lungs for the oxygenation. अब जब ये ब्लड एक मरतबा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स पहुंच जाए, वहां से ये ऑक्सीजन ले रिसीव कर ले, सो दिस ब्लड इज देन चेंजेस इनटू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाता है लंग्स में. लंग्स से ये ब्लड जो है ये आएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में थ्रू विच वॉल्व, थ्रू विच वीन, दैट इज पल्मोनरी वीन. पल्मोनरी वीन के थ्रू ये ब्लड जो है which becomes oxygenated in the lungs now is shifted toward the left atrium through pulmonary vein. पल्मोनरी वीन के थ्रू ये लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है.
So from the left atrium, this oxygenated blood is then transferred towards the left ventricle through which valve? Through mitral valve, which is also called bicuspid valve. And at the last, from the left ventricle, when this heart contracts, this blood ejects into the aorta, which is also called the largest artery of the body. And here also a valve is present, which is called aortic valve. So what will be the function, which I taught you in my previous lecture, that aortic valve will prevent the backflow of the blood from the aorta into the left ventricle, while it will allows the blood to flow from the left ventricle into the aorta. So in the last step, this left ventricle contracts, and the blood, oxygenated blood, is then shifted from the left ventricle into the aorta, and from the aorta to all parts of the body to take oxygen and different nutrients to the cells. So this was all about the brief function of the heart कि आपके ह्यूमन हार्ट फंक्शन कैसे करता है. मैं उर्दू में एक मरतबा आप लोगों को फिर बता देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए. कुछ लोगों को इंग्लिश जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती. होता क्या है, सबसे पहले आपके वेना केवास जो हैं, जिसमें सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आते हैं आपके बॉडी से राइट एट्रियम में. सो दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, ये राइट वेंट्रिकल में शिफ्ट होगा थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व. सो ट्राइकस्पिड वाल्व का फंक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया है. इसके बाद राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड ट्रांसफर होगा लंग्स में. लंग्स में ट्रांसफर होगा किस आर्टरी के थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू. एंड फ्रॉम द लंग्स, आफ्टर बीइंग ऑक्सीजनेटेड, this blood is then transferred to the left atrium through pulmonary vein. pulmonary vein के थ्रू ये blood जो है ये left atrium में आ जाएगा. left atrium से ये blood फिर ट्रांसफर हो जाएगा नीचे left ventricle में. through which valve? Through mitral valve or bicuspid valve. And same wise the blood will eject from the left ventricle into the aorta through aortic valve. aortic valve के थ्रू ये एओर्टा में ट्रांसफर हो जाएगा और फिर एओर्टा से ऑल ओवर द बॉडी जो है ये ब्लड चला जाता है और वहाँ पे सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक फंक्शन ऑफ द हार्ट कि हार्ट जो है वो बेसिकली फंक्शन कैसे करता है. अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. लाइक का बटन अगर आप लोगों ने प्रेस नहीं किया तो लाइक प्रेस करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोज़ जो है वो आपको उसकी नोटिफिकेशन होती रहे. थैंक यू सो मच.